So our today's topic is system virtualization. In this presentation, we will discuss system virtualization, its background, a bit of history, why is it needed, its type, three types of system virtualization, its application, challenges in this field, and finally we will conclude our presentation. Coming toward the introduction, system virtualization is a technique which allows us to run multiple OS on on a single hardware. इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन होता इसमें ये है कि हमारा एक ही हार्डवेयर है, सिंगल हार्डवेयर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल ओएस उस पे रन कर सकें। अब ओएस हो सकता है कि एक ही ओएस है और उसके हम मल्टीपल इंस्टेंस रन करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि मुख्तलिफ ओएस हैं, लेट्स से विंडोज़ है और लिनक्स है और कुछ और है, और हम उनको एक ही हार्डवेयर पर रन करना चाह रहे हैं। अब ये काम को अचीव करने के लिए हमें सिस्टम वर्चुअलाइजेशन चाहिए। शुरू ही कहाँ से हुआ? शुरू हुआ 1960s में, जब आईबीएम ने अपनी पहला वर्चुअल मशीन बनाया। आईबीएम चाहता ये था कि मेरा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सके। तो इसके लिए उन्होंने वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ किया, और इस टेक्निक को आज हर जगह यूज़ किया जा रहा है, डाटा सेंटर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, और बाकी भी जितने कंप्यूटिंग इंजन्स हैं या कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे इसको हर जगह यूज़ किया जा रहा है। मेन थ्री टाइप्स हैं इसकी, जिनमें फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन आता है। फुल वर्चुअलाइजेशन आपको अलाउ करता है कि आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को वैसे ही रहने दें, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को वैसे ही रहने दें, और एक हाइपरवाइजर को यूज़ करते हुए एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। इसी तरह पैराचुअलाइजेशन आपको अलाउ करता है कि आप ज़रा हाई परफॉर्मेंस अचीव कर लें, लेकिन इसके लिए आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जबकि कंटेनराइजेशन हम यूज़ करते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल ओएस को रन करने के लिए। अब इन टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा साहब आपको बताएं। First of all, I'll tell you about full virtualization. It allows multiple guest operating system to run on a single physical machine without any modification. This part is very important here, that without any modification it allows. Uh, Without any modification to the guest operating system. This is achieved through a special software which is hypervisor that creates a virtual machine that emulates the underlying hardware. Uh, Now moving towards the examples. First of all, here is AWS, Amazon Web Services. AWS is a cloud computing platform that uses full virtualization to provide its services to the users. With AWS, users can launch virtual machines known as EC2. EC2 stands for Elastic Compute Clouds Computing, which are running in a virtualized environment. The second example here is VMware. VMware is a popular virtualization platform that allows users to run multiple virtual machines on a single physical machine. They can be used in testing, development, disaster recoveries, and in teaching sectors. And moreover, now we will move towards the advantages and disadvantages of full virtualization. First advantage here is compatibility. Full virtualization allows for unmodified guest operating system to run on a virtual machine. So this is compatible as compared to the other virtualizations because there is no need of modification. Isolation. Each virtual machine runs in its own isolated environment, providing security and protection from the other virtual machines. The third advantage here is flexibility. Virtual machines can be easily created, modified, and deleted, providing flexibility in managing computer resources as compared to the other virtualizations. Reliability, it is also reliable. It can be replicated and moved between physical machines, providing increased reliability and redundancy. Now moving towards the disadvantages of full virtualization. First one is overhead. So what is overhead? Full virtualization has a higher overhead, and what is overhead? The answer is uh, the translation process between the hypervisor virtual machine and the host operating system or hardware. Okay, so the overhead in full virtualization is very high. uh, the other disadvantage here is hardware limitation and cost. Now moving towards the para virtualization. Para virtualization, it is it run multiple virtual environments, virtual machines, but unlike full virtualization, it uses a special API that allows the guest operating system to communicate directly with the hypervisor.
This point here is very important, that this communicate directly with the hypervisor, not like full virtualization. So this enhance the results and performance as compared to the full virtualization. One example of full virtualization in action is Zen. Zen is a popular open source hypervisor that uses para virtualization to provide its services to the users. With Zen, users can launch their virtual machines that are running modified version of Linux known as Zen Aware. And moreover, para virtualization is also in Google Cloud Platform. Google Cloud platforms use para virtualization to provide its compute engine services. Moreover, advantages of virtualization are performance. So this is the main advantage of para virtualization. It provides better performance compared to the full virtualization. Resource utilization is very improved in para virtualization, require less overhead compared to the full virtualization. Customization is also available in para virtualization, as it modifies the guest operating system to be modified to achieve the para virtualization. So yes, it is customized. Disadvantages of para virtualization are compatibility, complexity. It is very complex and it is not very compatible, uh, and hardware limit is also there. Containerization is our next and the last type of the virtualization. It is a type of virtualization that allow multiple isolated user space instances, like known as containers, to run on a single host operating system. It creates multiple instances of an operating system. Each instance is isolate, and each container share the same operating system kernel, but has its own isolated file system, network interface, and process space. This allows for the efficient allocation and utilization of the resources while maintaining strong isolation between the applications. So the real world examples of containerization include Docker and Kubernetes. Docker is a popular containerization platform that allows developers to package and deploy applications in container. So you can say that Docker is necessary here to package and deploy the containers applications in containers. And Kubernetes there is to automate uh, the whole process, like to manage the containers at scale. And advantages of the containerization are they are portable. Containers can be easily moved between the hosts, making it easy to deploy and manage applications across different environments. Isolation: containers provide strong isolation between applications. Resource utilization: containers share the host operating system kernel, as I said earlier, that but they had their own file system, network interface, and process space. And scalability: this is the major advantage of the containerization. They can be easily scaled up or scaled down depending on the demand. Disadvantages of containerization are limited operating system support. Containers rely on the underlying host operating system, which may limit the range of operating system that can be used. And security concerns are there. While containers provide strong isolation between applications, there's still a risk containers escape attacks. Information or data can be leaked from containers, which can compromise the entire host operating system. Complexity: yes, it is very complex to containerization requires a significant amount of knowledge and expertise, making it more complex to set up and maintain compared to the other virtualization. Now, from here, Al Hajlal will tell you further about virtualization. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स पे। और उसके अलावा इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है जिनमें सर्वर कंसोलिडेशन आ जाती हैं। Server consolidation is one of the most important applications of the system virtualization. It involves running multiple virtual machines on a single physical server. इससे हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाती है और मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाती है। इस तरह ही क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, लेट्स से अमेज़न वेब सर्विसेज हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर है, वो हेविली रिलाई करते हैं सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे, ताकि वो स्केल कर सकें और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोडक्शन वाला सर्वर है उसको हम एज अ डेवलपिंग के सर्वर के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है हम डेवलपमेंट में कुछ ऐसा काम ख़राब कर दें जो कि पूरा सर्वर को क्रैश कर दे और हमारी प्रोडक्शन में जो अच्छी चीज़ वो भी क्रैश हो जाए। तो हम
एक सर्वर के अंदर प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग बना लेते हैं और डेवलपमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग बना लेते हैं। इसके अलावा हम इसको डिज़ास्टर रिकवरी में यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स बना के उनको एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे इसका मेन चैलेंज तो ये है कि हम जब वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो दरम्यान में एक हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है बिटवीन आवर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आवर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होने की वजह से जो कि कन्वर्ट कर रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस में, उसकी वजह से हमारे इंस्ट्रक्शन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्शन नहीं हो पाता, इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। इसको बेहतर बनाया जा सकता है फुल वर्चुअलाइजेशन से पैरा वर्चुअलाइजेशन शिफ्ट होकर, लेकिन स्टिल उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं हासिल होती। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न है। बाद में ऐसे होता है कि हमारे डोकर के जो इंस्टेंसेस हैं, उनमें जो कोड रन हो रहा है, उनको इस तरीके से लिखा गया होता है कि वो डोकर का इंस्टेंस अपनी मेमोरी से एक्सीड कर जाता है। जो उसको एलोकेटेड मेमोरी होती है, उसमें से लीक होकर वो बाकी इंस्टेंसेस की मेमोरी में लीक होना शुरू हो जाता है एंड दैट कॉजेस सिक्योरिटी रिस्क। उसके अलावा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये आ जाती है कि हमारा एक ही हार्डवेयर में हमारे मल्टीपल ओएस हैं। अब हमारे काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोगों को हमें हायर करना पड़ता है जो कि अच्छे से समझते हों कि हमने एक्चुअली वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा लाइसेंसिंग का मसला आ जाता है। लाइसेंसिंग का मसला ये होता है कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करूँ ऑन अ कमर्शियल स्केल, तो मुझे एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को बाय करना पड़ता है, जो कि मुझे कॉस्टली पड़ सकता है ऑन अ लॉन्ग रन। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। सारे हार्डवेयर जो हैं वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। इस वजह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा बाज़ ओएस जो हैं वो इटसेल्फ वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से मसले आ सकते हैं। उसके अलावा इसकी डिपेंडेंसी हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हार्डवेयर फेल हुआ या हार्डवेयर इनकम्पैटिबल हुआ वर्चुअलाइजेशन के साथ, तो साथ ही हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट फेल हो सकता है। अगर हम कंक्लूड करें सारा कुछ, तो वर्चुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल ओएस को यूज़ कर सकें। इसके बेनिफिट में हार्डवेयर इंटेलिजेशन, स्केलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी और इनहेंस सिक्योरिटी आ जाते हैं। जबकि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसमें फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन आ जाती है। इन सब के अपने पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और मुख्तलिफ इनकी फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इनमें मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है और डेस्कटॉप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं। इस सब के बावजूद, इसके चैलेंजेस के बावजूद, सिक्योरिटी के बावजूद, इसको हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक एसेंशियल टेक्नोलॉजी है और ये बैकबोन है बहुत सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। तो अब हम एक स्क्रिप्ट प्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे VIRT इंस्टॉल, और उसके बाद उसका नाम बताएंगे यहाँ पे, जो जहाँ पे हमने अभी माई VM रखा हुआ है। उसके बाद मेमोरी बताएंगे कि वो कितनी मेमोरी लेगी, और डिस्क साइज़ और CD ROM पे आप बताएंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल होगा वो कहाँ पे होगा। उसके बाद हम जब वो वर्चुअल मशीन बन जाएगी, उसके बाद उसको हमने अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये कमांड है sudo vir sh start, और यहाँ पे जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद हम उसको कनेक्ट करना है क्योंकि अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से और उसके लिए हम VIRT व्यूअर करेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। और एंड पे अगर हमने अगर उस पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो कर लेंगे, और उसको अगर फिर जब हमने इसको शट डाउन करना है तो उसके लिए फिर ये कमांड है sudo vir एंड शट डाउन, और आगे वर्चुअल मशीन का जो नेम होगा वो आ जाएगा। और डिलीट करने के लिए हम उसको अनडिफाइंड माई VM कर देंगे। माई VM यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम होगा। दैट्स इट। थैंक यू।